Ayurveda, the way to healthy life. A path traveled by Gujarat Ayurveda University. आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र नहीं अपितु जीवन को समग्र रूप से जीने की कला का दर्शन है। इट accomplishes physical, mental and spiritual well-being. Ayurveda is becoming popular day by day as it is easily available, eco-friendly, cost-effective and toxicity-free due to its holistic approach. Its objective is preservation and promotion of health and prevention and cure of disease. दैविक और आसुरी शक्तियों द्वारा समुद्र मंथन करने पर दिव्य औषधि, जलौका, शंख चक्र और अमृत कलश सहित भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ। लॉर्ड धन्वंतरी is worshipped as god of Ayurveda. This ancient Indian wisdom was transferred from Brahma to Daksh Prajapati, Ashwani Kumar and to Indra. From Indra, this knowledge was received by Bharadwaj for the welfare of ailing humanity on earth. Later, Punarvasu Atre established medical school and Kashiraj Divodas Dhanvantari led the surgical school. Jamnagar, known as Chota Kashi, was established as Navanagar state by the ex-rulers who made outstanding contribution in laying Ayurvedic temple of learning at Jamnagar. By the grace of Rajmata Shri Gulab Korwa Ayurvedic Society was established in 1940 and Shri Gulab Korwa Ayurveda Mahavidyalaya in 1946. મારા સદભાગ્ય હું જાણ દિગ્વિજય ને મહારાણી ગુલાબ ખોરે જન્મી છું। આયુર્વેદમાં માનતા અમને બધાને શીખાડ્યું કે આયુર્વેદ ત્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી એલોપેથી નહીં કરવાની। એટલે અમે બધાએ ખદીરાદી ને આતે ને એ બધું ખાઈને તાજા બાજા થાય છે। મારા જન્મ દાદા જે હતા જુવાન સિંહજી, જેને અમે દાજી બાપુ કહેતા, એમને એની બહુ જાણકારી હતી, એને ભણતરે કર્યું, ઘણું જ્ઞાન હતું અને એમને બહુ જ ઉમેદ હતી કે આયુર્વેદ બધાએ શીખે ને કાંઈક સમજે। ચરકનું નામ દાજી બાપુએ મારા માને શીખવાડ્યું। મારા એ વખતના CMO ચીફ મેડિકલ ઓફિસર હતા ડૉક્ટર પ્રાણજીવન મહેતા, એમને બોલાવીને કે તમે આ વાંચો, ભણો અને બરાબર અને પછી મને કહો। ડૉક્ટર દાજી બાપુએ કીધું કે આપણે એક સંગ્રહ ઘર જેવું કંઈક ઊભું કરી કે જેમાં આ બધું રાખી અને જેને રસ હોય એ આવીને એને કોઈને કાંઈ વધારે ખબર હોય તો આપણને આપે, પણ ત્યાં જ આપણે બધું રાખી ત્યાં જોઈ અને આપણે એને આગળ વધારી। એટલે જે અત્યારે જેને આ બધા લાઇબ્રેરી કહો છો એ લાઇબ્રેરી ઊભી થઈ અને જુવાનસિંહજી દાદાના હાથે એનો પાયો નખાણો અને ઉદ્ઘાટન થયું અને એ છે આપણા આયુર્વેદ કોલેજ। આપણે આયુર્વેદ કોલેજને પાછા આયુર્વેદનું જ્ઞાન આપણે જે જાગૃત પાછું કર્યું ભારત વર્ષમાં એ ત્યાંથી ચાલુ થયું છે। એ આપણી આયુર્વેદ કોલેજનું અને આપણી આયુર્વેદિયાનું પાયણું છે। Government of India started Central Institute for Research in Indigenous System of Medicine in 1954 at Jamnagar, which was first research institute of Ayurveda in the country. The first postgraduate training center in Ayurveda was also established in 1956 at Jamnagar by the Government of India. 1965 में गुजरात विधानसभा द्वारा गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया और 5 जनवरी 1967 को देश के प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना जामनगर गुजरात में हुई। इन प्रयासों में एलोपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जीवन दास मेहता का अविस्मरणीय योगदान रहा। आज इस विश्वविद्यालय में श्री गुलाब कोरवा आयुर्वेद महाविद्यालय आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज, महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च, इंटरनेशनल सेंटर फॉर आयुर्वेदिक स्टडीज, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, मेडिसिनल प्लांट सेक्शन कार्यरत हैं। गुजरात की 11 आयुर्वेदिक शैक्षणिक संस्थाएं इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। विश्वविद्यालय की इन संस्थाओं में भारत के विभिन्न राज्यों के छात्रों के साथ साथ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अनेक छात्र अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। My name is Choi Jong-soo. I'm coming from South Korea.
I completed the BMS course. I was 6 years here. In addition to regular BMS course, Shri Gulab Karwa Ayurved Mahavidyalaya is running BMS English medium course exclusively for foreigners and NRIs. Institute for Postgraduate Teaching and Research in Ayurved imparts MD, MS and PhD degree courses in various specialties of Ayurved for Indian and foreign professionals. 3-month introductory course of Ayurved for foreigners is regularly conducted by this institute. Diploma, bachelor's and master's courses in Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, MSc in Ayurvedic Medicinal Plants and Diploma course in Yoga and Naturopathy are also conducted in Gujarat Ayurveda University. Till 2011, 13,100 graduates including 64 foreigners, 1,405 postgraduates, 146 PhDs, 88 M.Pharma and 70 MSc Medicinal Plant postgraduates have passed out. Subjects of Indian medicine, allied sciences like anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacognosy, pharmaceutical chemistry and pharmacology are taught to these students with recent advances. They have excellent facilities of internet for data collection and updating knowledge of the subject of their area of research in high-tech center. University is enriched with press and publication division. It has published good number of books written by eminent teachers and scholars. Department of Botanical Garden is actively engaged in maintaining the herbal gardens. The administration is fully equipped with computerization of each section. Central Library has collection of ancient and contemporary literature on various subjects of Ayurveda and allied branches of life sciences. University possesses collection of rare manuscripts related to Ayurveda. Gujarat Ayurveda University Pharmacy is manufacturing standard and quality Ayurvedic medicines as per classical methods with updated machinery in good packing to make it easily portable and palatable. The formulations are not manufactured for commercial purpose, rather to cater the need of patients treated in outdoor and indoor hospitals. Ayurvedic medical kit prepared by pharmacy had been a great success. The then Vice Chancellor Dr. P.N.V. Kurup made outstanding contribution in globalizing this university. Gujarat Ayurveda University achieved status of an international university by signing Memorandum of Understanding with institutions functioning in France, Canada, Brazil, South Korea, Japan, Germany, the Netherlands, Argentina and Israel. Very recently, in the leadership of Vice Chancellor Professor Medhavi Lal Sharma, the MOU has been signed with the Hindu University of Indonesia and Somnath Sanskrit University of Gujarat in presence of Honorable Chief Minister Shri Narendra Modi. Shri Narendra Modi inaugurated the new building of Postgraduate Institute on 9 September 2011. University is running successfully extension OPD services in INS Valthura, Indian Air Force Station, Indian Army, District Jail, Old Age Care Center and at Sasoi weekly. Regular diagnostic camps are organized. University hospitals have facilities for specialized Panchakarma treatment for neurological and chronic degenerative diseases and iatrogenic conditions. Leech therapy is very popular in skin diseases. Kshar Sutra therapy is practiced to treat piles and fistula in ano. Excellent work has been done in the university on diabetes, anemia, osteoporosis, mother and child health care, Rasayana as adjuvant to pulmonary tuberculosis and to protect the side effects of radiation and chemotherapy in cancer, geriatric diseases, etc. The outcome of these researches are published in various national and international journals. आयु एन इंटरनेशनल जर्नल रिसर्च इन आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रांगण के अतिरिक्त ससोई ग्राम स्थित वनौषधि उद्यान में अनेक औषधियां उपलब्ध हैं। इन वनौषधि उद्यानों को विकसित करने में तत्कालीन वाइस चांसलर श्री रसिक भाई पारिक और श्री वसंत भाई मेहता का अतुलनीय योगदान रहा है। वनौषधियों की कोऑपरेटिव बनाकर बाई बैक बेसिस पर ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की तर्ज पर हर्बल रेवोल्यूशन द्वारा जहां एक और आयुर्वेदिक फार्मेसीज को स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिनल हर्ब्स उपलब्ध कराकर गुणवत्ता युक्त औषधियों का निर्माण किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर ग्लोबल हर्बल मार्केट में अपनी साझेदारी बढ़ाकर देश के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया जा सकता है। प्राचीन शास्त्रों में प्रत्येक नक्षत्र और राशि के आराध्य वृक्षों का वर्णन उपलब्ध है। साथ ही ग्रहों के रत्न और वनस्पतियों के धारण, हवन और इन वनस्पतियों के जल से स्नान का विस्तृत वर्णन स्वास्थ्य रक्षा हेतु बताया गया है। यह ज्ञान आयुर्वेद और ज्योतिष के परस्पर संबंध को उजागर करता है। योजनाबद्ध रूप से नक्षत्र और राशि उद्यान की स्थापना कर इस प्राचीन ज्ञान को आज के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यूनिट की स्थापना इस ओर एक सराहनीय कदम है। गुजरात की भूमि से ब्रह्मा, अश्वनी कुमार, भृगु, विश्वामित्र, कश्यप और च्यवन ऋषि जैसे महान मनीषियों का संबंध शास्त्रों में उल्लिखित है। इस देवभूमि को झंडूजी भट्ट, रणजीत राय देसाई, बापालाल वैद्य, विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर विजय ठाकर
बढ़कर प्रसिद्ध चिकित्सक प्रोफेसर सीपी शुक्ला जैसे महान आयुर्वेद मनीषियों ने गौरवान्वित किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर मेधावी लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कुलपति श्री के सतत प्रयास एवं सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जयनारायण भाई व्यास की पहल से राज्य सरकार द्वारा 5.5 करोड़ का अनुदान धन्वंतरी मंदिर के नवीनीकरण हेतु, चिकित्सालय के इंडोर ब्लॉक, लाइब्रेरी, फार्मेसी ब्लॉक और कुलपति आवास निर्माण हेतु प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासकीय भवन, आयुर्वेदिक फार्मेसी और श्री गुलाब कौर आयुर्वेद महाविद्यालय में लंबे समय से पड़े रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की स्वीकृति भी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भगवान धन्वंतरी की अनुकंपा से बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं कुशल प्रशासक माननीय स्वास्थ्य मंत्री गुजरात श्री जयनारायण भाई व्यास के मार्गदर्शन और सहयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार के आशीर्वाद से गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर प्राचीन तक्षशिला और नालंदा की प्रसिद्धि के शिखर को आने वाले दिनों में अवश्य स्पर्श करेगा। These developments will contribute immensely to make Ayurveda medicine of the millennium.